Hello everyone, and a very good morning to all of you, and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. As we all know, from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. Today is 22nd November, that is Wednesday. Okay, so these are some of the important articles. First visual of 41% trapped in tunnel emerge. I hope you are aware that in Uttarakhand, actually, almost around 41 people are actually trapped inside the tunnel. They were the workers who were digging the tunnel and all. Okay, the next one, Netanyahu, Hamas chief hint at deal on Gaza truce. So these two things we will be discussing it in detail. Let's start with this one. Okay, देखो actually क्या है, rescue team identify the workers using an endoscopic camera. You know endoscopy? It uses, there's a technology called as उसमें ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सो उसमें ऑप्टिकल फाइबर होता है, इसमें लाइट्स जाती है and all. That's how the endoscopy works. So with the help of that, there have been some videos have been recorded and all. Okay, 6-inch pipe which has drilled through the debris, horizontal drilling to create a safe passage. A safe passage resumes and all. So these are the things coming in the news. Okay, the first visuals and all came at, so this is what is being talked about. Aap theek ho, are you fine and all. These are the things being talked about and all. Okay, now so let me show you what where exactly it is. It is Uttarakhand, and here you will find Uttarakhand, and this actually project is a part of 𝗟𝗲𝗴𝗹 Pariyojana. Please go and read about it. 𝗟𝗲𝗴𝗹 Pariyojana. So this Pariyojana and all. So to connect 4 religious places of Uttarakhand, and for that sense, Uttarakhand is having a lot of mountains. Tunnels are being made, and that is why one of the tunnel is this one. So which actually, unfortunately, the landslides happen and all, and they got stuck. So these are the things you should be knowing it. Okay, but before that, this is a passage for you. Please read the passage carefully, and I'll be asking questions because it has been in the news. So there is a probability that they can give one question even this year in CLAT 2024 from this passage or from this topic. So that is why I have given a passage. Please read it carefully. And I am giving you 1 or 2 minutes. And after that, I will ask questions. तो इसको पढ़िए गौर से और फिर इसका आपसे सवाल पूछा जाएगा. Yes, good morning everyone. Good morning guys. And everyone please press the like button. सबको like button press करते जाओ. So have you read it? If you have read it, write in the comment section. Yes sir, yeah, I have read it. मैंने पढ़ लिया. Okay, shall I give the question? Done? Okay, let's start with what is X in the passage. Atal Tunnel, Zojila Tunnel, 𝗟𝗏𝗴𝗃 Tunnel, Shangri-La Tunnel. What is the right answer to this question? क्या सही जवाब है बताइए. जो पैसेज में X है वो कौन सा टनल है? जो उत्तराकाशी में जो टनल है, the tunnel which is very much in the news for the past 7-8 days. What is the name of the tunnel inside which actually almost around 41 workers are trapped? So what is the name of that tunnel? Yes, 𝗟𝗏𝗴𝗃, very good. हाँ, 𝗟𝗪 tunnel is the right answer to this question. So X पूछा जा रहा था in Uttarakhand. So basically we are actually referring to the X, that is 𝗟𝗪 tunnel. Okay, yes. So C is the right answer. Yes, Aditya Vajpayee, you all are right. Now the next question is, who is Y in the passage? Mr. Nitin Gadkari, Mr. Pushkar Singh Dhami, Mr. Arnold Dix, Mr. Bimal Patel. What is the right answer to this question? जो पैसेज मैंने आपको शो किया था उसमें वाई कौन से व्यक्ति हैं आपको बताना है. This also we have discussed it yesterday as well, and that is why you should be easily answering this question. Actually, a person from Australia has been brought. His name is Mr. Arnold Dix. 𝗟𝗏𝗴𝗃 tunnel है. Yes, आदित्य वाजपेयी, देवतारू पाल, you all are right. हाँ, C is the right answer. So actually क्या है, एक Y कोई person है, उनको लाया गया. So who is that Y person is at the forefront of the complex rescue mission? So a person from Australia. His name is Arnold Dix, and he is very famous. तो यहाँ लिखा होगा इनके बारे में ना. Is a professor Arnold Dix. He has a lot of expertise regarding tunnel and all, tunnel safety and all. So that is why he has been called, and he will be
actually helping the workers to come out. So C is the right answer. Yes, 𝗟𝗲𝗴𝗋𝗀𝗃 you all are right. Now on the first page there was an article, Netanyahu is the prime minister of Israel. So Netanyahu Hamas chief hint at deal on Gaza truce. Truce का मतलब होता है an agreement between enemies or opponents to stop fighting or arguing for a certain time. So basically they have done some truce that okay, both will not be fighting each other, both will not be attacking each other, and that is what they have reached to a certain deal. Okay, so that is what they are talking about. Leader of Hamas 𝗟𝗲𝗴𝗃 𝗂𝗃 said on Tuesday that a truce agreement with Israel was closed, and Prime Minister Benjamin Netanyahu said he hoped for good news soon about hostage. So I hope you are aware Hamas have actually a lot of, I think, hostages of Israeli people and all. So that might be released, so that if the agreement is released properly. So yes, these things were in the news. Just say for example, this was in the news. Israel agrees to deal for release of 50 hostage. Hamas welcomes truce and all. So these are the things coming in the news. Okay, so just keep on following it. Just have an idea now. Okay. Now, so Netanyahu, according to remarks released by Israeli Prime Minister, said we are making progress. I don't think it's worth saying too much and all. So these are the things being talked about. Hamas official told Al Jazeera that negotiations were centered on how lasting the truce would be and all. Okay, so these are the things being talked about. 50 civilian hostage and all. Iski bhi baat ho rahi hai na. So these things you should be knowing it. Okay, we have discussed it so many times, hai na. So geography वगैरह पता होना चाहिए. This is Red Sea, this is Mediterranean Sea, Gulf of Aden and all, है ना. And here you will find Israel. Okay, yes, here is Gaza. Okay. Now, the next one is on the first page. There was an article at BRICS Summit. Xi calls for immediate ceasefire in Gaza. See, BRICS Summit has already been done in Johannesburg this year. Okay, Johannesburg, South Africa, where 6 new nations have been added. So 6 nations will be added from 1st January 2024. So can anyone tell me all the name of all 6 nations? If you tell me, I'll be very happy. Okay, so that was done in the past in the same year, but this time actually virtual summit was organized. A special summit was organized regarding Israel-Hamas conflict. Okay, so PM Modi did not participate, but from India's side, External Affairs Minister Mr. S. Jaishankar participated in this. Okay. Okay, so PM Modi will not attend it. Virtual summit of BRICS plus grouping. Okay, to be held regarding Israel-Hamas conflict and all. So that is what it was in the news. Okay. Now, so even South Africa has recalled its diplomat from Tel Aviv. Tel Aviv is, you can say, sort of a working capital of Israel, because Jerusalem is not recognized by everyone, and also Tel Aviv for all practical purposes is working as capital. A lot of embassies of many countries you will find it in Tel Aviv. So the ruling African National Congress supported a motion in parliament calling for Israeli embassy in Pretoria to be shut down. So they have actually Pretoria, जो है South Africa capital है. So they have called for shutting down the Israeli embassy. In fact, it means you can say that South Africa is clearly against Israel in this. Okay, so that is what it was in the news and all. Okay. So in contrast, India's comment by PM Modi thus far made at the Voice of Global South summit हुआ था, उसमें was a strong condemnation of civilian deaths and call for emphasis on restraint, dialogue and diplomacy. So this is what India had said in the past. Okay, so that is what is being talked about. But यहाँ पे लिखा हुआ है कि Xi means Xi Jinping, the president of China, has called for immediate ceasefire and all. That is what it was in the news. Okay, the next is Israel lists 𝗟𝗲𝗴𝗃 as a terrorist organization because few days before the 26/11 anniversary. I hope you are aware the 26/11/2008 Mumbai terror attacks and all. So there is a question for you regarding this. Okay, the question is, what was the name of operation conducted by NSG to flush out the attackers in 26/11 attack? उस operation का नाम क्या था? Operation Black Thunder, Operation Black Tornado, Operation X, Operation Polo. हाँ, जो 6 कंट्रीज एडेड हुए ब्रिक्स में, उसका नाम आपको पता होना चाहिए. ठीक है, 6 न्यू नेशंस. हाँ, अर्जेंटीना, इथियोपिया, यूएई, सऊदी अरब, इजिप्ट, ईरान. गुड. हाँ, बताइए इसका आंसर बताइए. व्हाट वाज द नेम? एनएसजी आप जानते हो ना, जो ब्लैक ड्रेस जिनका होता है ना. इट्स आर्म फोर्सेस है ना, पार्ट ऑफ, यू कैन से दैट. यस. व्हाट वाज द नेम ऑफ? देखो मैंने आपको कुछ चीज बताई. इफ यू डू नॉट नो इट, अगर आपको आंसर पता है सो मार्क इट. इफ यू डू नॉट नो द आंसर, ट्राई टू फाइंड द सिमिलर ऑप्शंस. मैंने बताया है पेड क्लासेस में. ये देखो, ये दोनों सिमिलर लग रहा है.
So the probability is very high that either of the two would be the correct answer. ठीक है? So the answer is actually Operation Black Tornado. So B is the right answer to this question. अच्छा इसको भी कभी पढ़ना जाके. What is Operation Black Thunder? और ये दोनों भी. Okay, so this is the homework. So the right answer here is B. Operation Black Tornado is the right answer to this question. देखो Wikipedia page में लिखा हुआ भी यहाँ पर. Okay, that on 29 November India's NSG conducted Operation Black Tornado and all. So अभी recently anniversary हुआ ना. 15 years मतलब 26 तारीख को हो जाएगा 26 नवंबर को 4 days later. So you should be knowing it. Black Thunder भी NSG ही का ऑपरेशन था but वो पास्ट में हुआ था. So इसको ये फाइंड आउट करना ठीक है. But here 26/11 attack is related with Operation Black Tornado. So B is the right answer to this question. ठीक है. So इसको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. Go and read something about it. थोड़ा सा Wikipedia भी पढ़ लेना क्या क्या and all. ठीक है. इस तरह keywords जो है you should be knowing it. The next one is Chinese Premier 𝗟𝗂𝗏𝗧 to attend G20 virtual summit. Like I hope you are aware in this year G20 summit, instead of the China's president, the premier came. So he is the premier 𝗟𝗂𝗏𝗧. ठीक है. So premier is like prime minister you can say, but in China president is considered as more senior or more powerful than premier. ठीक है. So you can say he is the second man. Okay, not the first one. So he will जैसे एक बात हुई थी कि G20 summit के बाद there was a talk that in November India will be hosting a virtual G20 summit as well, है ना? I hope you remember it. ठीक है. So for that actually Chinese Premier 𝗟𝗂𝗏𝗧 to attend G20 virtual summit. That is what it will be in the news. Means the Premier will be joining it. ठीक है. Sir ऑपरेशन बोलो क्या चीज से रिलेटेड है? देखो ऑपरेशन ये हो गया. ऑपरेशन एक्स इज रिलेटेड विद हैंगिंग ऑफ अजमल कसाब. हियर इट इज. सो इसको ऑपरेशन एक्स कहते हैं. ओके. ऑपरेशन पोलो इज रिलेटेड विद हैदराबाद. सो मर्जर ऑफ हैदराबाद विद इंडिया. ओके, दैट्स ऑपरेशन पोलो. ब्लैक थंडर ये होमवर्क है, मैं सब नहीं आंसर बता दूंगा. आफ्टर द क्लास इज ओवर, जब क्लास ओवर हो जाएगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना एक्सप्लेन करके कि व्हाट इज ऑपरेशन ब्लैक थंडर. ओके, एंड ईयर के साथ. दैट इज व्हाट आई एम वेटिंग फॉर इट. Okay, so which of the following is called as health capital of India? Can anyone tell me? Chennai, Mumbai, Kolkata, Bengaluru. What is the right answer to this question? Which of the following is called as health capital of India? Chennai, Mumbai, Kolkata, Bengaluru. There's a reason why I'm asking it. Okay, the right answer is शायद नहीं पता होगा लोगों को, but yes. A lot of people go to the Chennai because you will find a lot of big famous hospitals in Chennai. Okay, so A is the right answer to this question. It's Chennai actually. एक आर्टिकल आई थी. I hope you must have gone through it. Shankar Netral founder, vitreous retinal surgeon, Mr. Badrinath passes away at 83. So Shankar Netral is actually a very famous eye hospital in Chennai. This is very famous. बहुत famous जगह है. So from entire India, people go to Shankar Netral for eye operation, or if there is any eye related issues, there people go and visit there, है ना? So that is why you should be knowing it. ये काफी famous है. ठीक है, so you should be knowing about it. So he died. The founder of Shankar Netral, Mr. Dr. S.S. Badrinath, has died recently. He has won Padma Shri Padma Bhushan award as well. Okay, so he has completed MBBS in 1962. ठीक है, बहुत पहले की बात है. ठीक है. Okay, then ophthalmology वगैरह में research वगैरह he did and all, है ना? Okay, every day at 9 p.m. we are running this CLAT crash course for the upcoming 2024 exam. Okay, you all should attempt it, watch it. That would be very very beneficial both on YouTube and app. We are showing this class. ठीक है, एक क्लास मैंने भी करा है regarding the awards, है ना? I have done the awards, Oscar awards, other awards like Nobel Prize and all, है ना? And then science and technology में I have done a lot of questions regarding the futuristic technology. Go and watch it. Okay, so on 25th November at 11 a.m. in the morning, we'll be having a 4th All India Open Mock Analysis on the same YouTube channel. So do watch it. That would be very very beneficial for you. और एक और चीज है, if you are planning for next year, this is for those who are planning for 2025 CLAT, he or she can go for this course. Call on this number 9538895678. But if you want to avail the discount, you can attempt this scholarship. Get up to 90% scholarship. On 26 November at 11 a.m. in the morning, we'll be having a scholarship test. Okay, yes. And on 2nd December at 6 p.m. For 2025 students, यानी next year वालों के लिए 12 months to CLAT. So this will be a session.
where actually Nivedita ma'am will be discussing about it. So download our app, go to CLAT section and watch it. Okay. And one more thing is there. Today at 6 p.m. Today at 6 p.m. I'll be having a class. Learnings from previous year question. Learnings from previous year question. This is a class, especially for the next year student, 2025. So if you are planning for next year, come join at 6 p.m. today. So download our app, go to CLAT section, and I'll be discussing today about learnings from previous year question for CLAT. तो अगर इस साल वाले भी देख सकते हैं, so they can also learn and attempt those types of things and all. ठीक है. Okay. Let's talk about editorial. Let's move on. 1, 2, 3, 4 मैंने बताया these two are authorless. So basically this is authorless editorial. So it is written by editors of the Hindu newspaper. These two are actually based on author's opinion. Author का नाम फोटो सब लगा रहता है. So let's talk about this. How the BJP juggernaut chugs along. See, this is a political article. And I've told you that if there is a pure political article, skip it. छोड़ देना है, political article नहीं पढ़ना है. ठीक है? So we are skipping this one. We are moving here. Alarming countdown. All nations must strive for net zero carbon emission. Okay, पहले आप ये question का answer करो. Since we are talking so much about net zero carbon emission and all. In which of the following COP conference of parties PM Modi announced Panchamrit? COP done under UNFCCC, है ना? ये सब मैंने पेड क्लासेस से पूरा पढ़ाया है ना? Important environmental summit में कि there are conference of parties which are done under different जैसे UNFCCC के अंदर में होता है, UNCCD के अंदर में होता है. These are the things I had already discussed it. Okay, so please tell me. So the Panchamrit was announced by PM Modi in which of the following conference of parties? Okay, the right answer is COP26. He is the right answer to this question. Yes, Gauri Sethi, Manvi Bharadwaj. Yes, ऋषि कुमार झा, you all right. COP26 में अनाउंस किया गया था और ये तो अभी होने जा रहा है. Very soon we'll be having this, है ना? 2023 में. ये लास्ट ईयर हुआ था 2022 में और ये 2015 में हुआ था ना. COP21. You should be knowing these things, है ना? And what is India's net zero emission target? ये पंचामृत में अनाउंस किया गया था that there are targets, है ना? 4 टारगेट्स जो है वो 2030 का है ना, और 1 टारगेट इज फॉर 2070. India's net zero emission target. हाँ, Glasgow, you will find it in Scotland. Very good. India's net zero emission target is in India का कब टारगेट है? That net zero emission target would be 2070. So C is the right answer. Yes, Gauri Sethi, Gopal Goyal, Manvi Bharadwaj, you all are right. So the title of the United Nations latest report, broken record, ये title है. आया है क्या? This is basically related with the again the same pollution, environmental damage, greenhouse gas emission and all. ठीक है? So they are talking about Paris Agreement 2015, Paris Climate Agreement. को PA लिखने हैं short में. So I hope you are aware. We have taught many times that this is the goal of announced in Paris Climate Agreement. That by the end of century we should ensure that the average temperature should not cross more than 1.5 degrees Celsius increment as compared to pre-industrial level, and if possible then 2 degrees Celsius, है ना? यानी इंडस्ट्री जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था उस वक्त से लेकर एंड तक जो टेम्परेचर राइज हो रहा हो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं राइज हो और 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं राइज हो. अगर बेहतर है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर रह जाए, है ना? दैट इज व्हाट द टारगेट इज. However, the report says this, है ना? देखो ब्रोकन रिकॉर्ड वाली जो रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन इमिशन प्रोग्राम इमिशन गैप रिपोर्ट भी कहते हैं, इमिशन गैप रिपोर्ट कहते हैं या ब्रोकन रिकॉर्ड कहते हैं. इसने ये कहा है कि 3 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. सो द टारगेट इज 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस. ये ना पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट. बट द रियलिटी इज एक्चुअली मूविंग अहेड वेरी फास्ट. वी आर टॉकिंग समथिंग जो बात हो रही है वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट शायद नहीं हो पा रहा है बिकॉज इट विल गो अराउंड 3 डिग्री सेल्सियस and of course it is a worrying sign for us. Okay, so that is what PA मतलब Paris Climate Agreement they are talking about, है ना? What still resulted in an overshoot of 2.5 to 2.9, है ना? 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक जा सकता है. Okay, however, if it is not as if the PA has been infrastructure GHG emission 2023 based on policies in place were projected to increase and all. तो ये सब ट्राई कुछ किया गया, ऐसा नहीं कि पूरी तरह यूजलेस है पेरिस एग्रीमेंट, but yes there has been an attempt and all.
फिर इंडिया को वो है इंटेंडेंट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की बात हुई है ना, वही जो पंचामृत है, नाउ इट इज कॉल्ड एज पंचामृत. सो दीज आर द गोल्स, and 1 2 3 4, so 4 goals is of 2030, 1 net zero emission is of 2070. These 5 are together called as panchamrit, right? इनको पांचों को पंचामृत कहते हैं. Okay, lifestyle for environment की बात कही गई. We have discussed about it that lifestyle for environment has been also been declared in COP26, talking about the sustainable development and all, है ना. UN के AC में बैठ कर लोग climate change की बात कर रहे हैं. Yes, so yes, that is also an issue. So these are the things being talked about. अच्छा, कुछ words जैसे use किया था, climate mitigation. Mitigation मतलब क्या होता है? Reducing the adverse impact of climate change, है ना. तो ये सब वर्ड एक्चुअली न्यूज़पेपर में काफी जगह यूज किया था, अगर आप पढ़ोगे ये सब टर्म्स. सो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड ऑल्सो दीज आर द थिंग्स बीइंग यूज्ड अगेन एंड अगेन. एक्चुअली क्या है, हाँ यस गौरी सेट्टी, एक्चुअली होता क्या है, दिस इज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय गौतम बुद्धा, 4 नोबल ट्रुथ्स. ये शायद आपने पढ़ा होगा, हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा था ना, कि द वर्ल्ड इज, द गौतम बुद्धा बिलीव दैट द वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम पेन. दुनिया में दुखे दुखे हर जगह, and the main reason for pain and suffering is because of this. तो जो मेन इनका इशारा था वो यही था कि डिजायर, so unlimited desire is causing pain, and this is very true even today also, है ना. अगर आपने देखा होगा तो जो पॉल्यूशन हो रहा है काहे को होता है, because we are actually we keep on desiring more and more thing harming the environment. ठीक है, जितना मेंटल स्ट्रेस होता है, बहुत हद तक मेंटल स्ट्रेस अनलिमिटेड डिजायर की वजह से भी होता है ना. हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, एंड देयर इज नो लिमिट टू दैट, एंड पीपल कीप ऑन डिजायरिंग न्यू थिंग्स, एंड ऑफ कोर्स, है ना, देन दैट इज व्हाट ही हैज सजेस्टेड, है ना, कि देयर इज अ सॉल्यूशन टू दैट, एंड द सॉल्यूशन टू दैट, द पाथ टू एंड सफरिंग इज एंड टू फॉलो 8-fold path, द कंट्रोलिंग ऑफ डिजायर्स एंड ऑल. ठीक है, सो बहुत सारे फिलोसफर्स रहे हैं और रिलीजियस प्रॉफिट्स रहे हैं, दे हैव टॉक्ड अबाउट वन थिंग, एंड दैट इज कंट्रोलिंग ऑफ डिजायर्स, है ना. जैसे जो कि ये पढ़ना है मेरे सिलेबस में, कई बार गौतम बुद्धा से रिलेटेड चीजें एग्जाम में सवाल आती है इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इफ यू सी, एंड दैट इज व्हाई आई हैव डिस्कस्ड इट. तो ये जो है ना, जैसे कहा था कि क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है. सो पीपल गिव डिफरेंट सॉल्यूशंस, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन इज कंट्रोलिंग ऑफ डिजायर्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना. देन ओनली वी विल बी एबल टू harm less the environment, है ना. Okay, recognizing the impact of climate change on health. Okay, now let's talk about it again. We're talking about it कि COP28 होने जा रहा है. The COP28 is going to happen in Dubai, United Arab Emirates. I hope you are aware. Go and find out who will be the president. Write it in the comment section. The president of COP28. After the class is over, write it in the comment. ठीक है. अब इसमें क्या बात हो रही है कि ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स हेल्थ डायरेक्टली, कॉजिंग मोर सिकनेस एंड डेथ एंड ऑल. इस जाहिर सी बात है भाई, जब क्लाइमेट चेंज होगा वो हेल्थ पर बहुत नुकसान करता है. यस, क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है ना, सब वही सब तो है. सो इट इज हार्मिंग द हेल्थ, द लंग्स, द हार्ट, डिफरेंट डिजीजेस आर गेटिंग कॉज्ड, है ना. सो दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट, है ना. फिर अगेन द वही पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का टारगेट की बात कर रहे हैं. क्लियरली वी हैव फेल्ड, वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट, है ना. फिर क्लाइमेट इमरजेंसीज आर ऑन द राइज, एक्सट्रीम हीट, कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी आ जा रही है, हीट वेव्स चल रहा है, साइक्लोन्स आर ऑन द राइज, फ्लड्स, अब्रप्ट फ्लड्स इज कमिंग, है ना. इनफैक्ट देयर आर प्लेसेस वेयर ड्रॉट्स आर हैपनिंग वेयर प्रीवियसली वी हैड नॉट सीन एनी ड्रॉट्स. ठीक है. यस, COP28 के हेड जो है सुल्तान अल जाबिर, वेरी गुड, वेरी गुड. सुल्तान अल जाबिर विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ COP28. गुड. हाँ, okay. The next one is the double burden of morbidity that India faces from communicable and not morbidity, मतलब deaths, है ना, from communicable and not non-communicable disease will be worsened by climate change. Climate change की वजह से of course बीमारियां जो है बढ़ रही हैं, उससे डेथ्स बढ़ रहे हैं, ना. क्लाइमेट चेंज की वजह से वेक्टर बॉर्न डिजीज जैसे मॉस्किटो, सैंड फ्लाई, टिक्स, ये सब से जो होता है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो बीमारी होती है ना, जैसे डेंगू, मलेरिया एंड ऑल, व्हाटएवर एटसेट्रा एंड ऑल. सो दीज आर ऑन द राइज, है ना. हीट ऑल्सो अल्टर्स द वेरुलेंस ऑफ पैथोजेंस. अगर गर्मी ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो जैसे आपने सुना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल रीजन्स में बहुत सारी ऐसी खास बीमारी होती है ना, लोकस्ट अटैक, पेस्ट अटैक, ठीक है. फिर डेंगू, मलेरिया, दीज आर मोस्टली प्रिवेलेंट इन ट्रॉपिकल रीजन एंड ऑल. एपिडेमिक कॉमनली occur after floods but extended warm periods and all.
तो बीमारी वगैरह भी होती है फ्लड्स वगैरह से एंड ऑल दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट, है ना. हीट, फिजिकल exertion, dehydration, concentrate for laborers could lead to kidney injuries and all. So yes, these are the things being talked about. If we are actually giving extreme pressure to our body, it can damage our organs as well, है ना. So chronic obstructive pulmonary disease, है ना. So pulmonary disease वगैरह हो सकती है, lungs असर कर सकता है. It might impact our lungs, heart and all, है ना. Heart, है ना. So these are the things, है ना, being talked about. फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं. देखो एक चीज होती है बहुत फेमस आजकल न्यूज में कई बार आता है, PTSD. इट मींस इफ समवन हैज एक्सपीरियंस सम शॉकिंग एक्सपीरियंस, तो उसको क्या होता है, कुछ बहुत लाइफ में कुछ बहुत सदमा लग गया, या कोई ऐसी चीज हो गई जो बहुत ही डेंजरस इवेंट था, एंड आफ्टर दैट अ पर्सन एक्चुअली गोज इन स्ट्रेस एंड ऑल. सो दीज आर द थिंग्स. ऑफ कोर्स with the help I mean with climate change, these things are on the rise and all. Climate emergency से ये सब भी. अब किसी घर में नॉर्मल रह रहा है, एक बार फ्लड आ गया, उसका घर बर्बाद हो गया. So of course it will impact. It might cause that guy PTSD and all. So these are the things being talked about. Okay. Yes, India is urbanizing at a rapid pace in an unplanned manner. अब ये author बता रहे हैं कि जो urbanization है, people are actually the urban areas are expanding, है ना. शहरों की आबादी बढ़ रही है, बट अनप्लान्ड मैनर में. अब अगर अनप्लान्ड शहर होगा तो क्या होगा, रोड्स प्रॉपर नहीं बनी है तो उससे कंजेशन होगा, ट्रैफिक होगा. अब उससे क्या होगा कि जो जैसे सीवेज है, नाली वगैरह प्रॉपरली नहीं बनी होगी, सीवेज इश्यूज वुड बी देयर एंड ऑल. अर्बन एरियाज नॉट टेम्पर्ड बाय अर्बन ग्रीनरी एंड ओपन स्पेसेस एंड फिल्ड विद एस्फॉल्ट रोड्स एंड हीट. यही सब बता रहे हैं कि देखो जब इस तरह की सीमेंट की रोड्स बनती है तो उससे हीटिंग होता है ना. तो अर्बन एरियाज में गर्मी हीट होने का एक और रीजन है सीमेंटेड हाउसेज. सीमेंट स्ट्रक्चर जो होता है ना, उससे क्या होता है, गर्मी बहुत होती है ना. इट कॉजेज हीट एंड ऑल. दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट, है ना. इसीलिए एक टर्म दिया गया अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट. कहा भी जाता है कि व्हाई आर अर्बन एरियाज कॉल्ड एज हीट आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड. तो उसका एक रीजन ये है कि जब सीमेंट के स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसका रिफ्लेक्टिविटी बहुत कम होता है, एब्जॉर्ब बहुत करता है हीट, सो इट कॉजेज हीट. सेकेंड थिंग, जब अर्बन एरियाज बनाते हैं तो डिफॉरेस्टेशन होता है, पेड़ काटा जाता है ना. फॉरेस्ट और द ट्रीज हेल्प अस एब्जॉर्ब द हीट, तो पेड़ ही नहीं रहेगा तो वो होगा. तो इसी चीज ये है कि जब अर्बन एरियाज में ऑटोमोबाइल ज्यादा होती है ना, गाड़ी पॉल्यूशन करती है, सो दिस आल्सो कॉजेज हीट आइलैंड इफेक्ट एंड ऑल. ठीक है, मतलब हीट आइलैंड इफेक्ट ऐसे समझो जैसे मान लीजिए पूरा कंट्री है, ठीक है, यहाँ पर एक शहर है, तो जब आप टेम्परेचर देखोगे तो इसका पूरे कंट्री के रेस्ट ऑफ द एरिया का टेम्परेचर कम होगा, तो यहाँ इस एरिया का इसकी बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द सराउंडिंग. यहाँ पे एक शहर है तो यहाँ पर गर्मी ज्यादा होगी, यहाँ पे एक सिटी है, सो हियर यू विल फाइंड मोर हीट. ठीक है, ऐसा लग रहा है ना कि पूरे रिवर में एक आइलैंड है ना. दैट इज व्हाट दे आर रेफरिंग टू अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट. ठीक है. Mitigation efforts begin with understanding the direct and indirect pathways by which climate change impact health and assessing the burden and all. वही mitigation मतलब reducing the impact of climate change. इन्हें ऐसा कुछ किया जाए ताकि climate change के असरात लोगों तक कम से कम पड़े, है ना. That's the idea of mitigation. So there are a lot of measures and all taken and all. खैर, okay, let's move on to the next one, parochial law. They are talking about पैरोकियल ओल्ड लॉ. देयर टॉकिंग, एक्चुअली क्या हुआ था कि रिसेंटली एक जजमेंट था हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट. इट स्ट्रक डाउन 75% रिजर्वेशन लॉ इन प्राइवेट सेक्टर. एक्चुअली क्या हुआ था, फ्यू इयर्स बैक इट वाज वेरी मच इन द न्यूज इन जनवरी लास्ट ईयर. एक्चुअली द हरियाणा गवर्नमेंट गिव 75% रिजर्वेशन टू इवन प्राइवेट सेक्टर एज वेल. 75% रिजर्वेशन टू लोकल्स, यानी हरियाणा के लोगों को. So in private sector where salary is less than 30,000, जहां 30,000 से कम सैलरी हो, वो प्राइवेट कंपनी अगर हरियाणा में स्टैब्लिश्ड है तो 75% जो लोग हैं वो उसी लोकल हरियाणा के होने चाहिए. दैट इज व्हाट इट वाज इन द न्यूज. ओके, बट इट वाज स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा. एंड व्हाट द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट सेड, है ना, तो the court stated that it was beyond the purview of the state to legislate on the issue and restrict private players from recruiting people from open market. तो ये बताना चाह रहे हैं कि एक रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ओपन मार्केट से, यानी नॉट अलाउइंग मतलब मच फ्रॉम अदर स्टेट्स एंड ऑल. द नेक्स्ट वन इज दे आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 14 एंड 19 गेटिंग वायलेटेड. सो मैंने बताया है व्हाट इज आर्टिकल 14. आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ. Equality before law means everyone is equal in the eyes of law. That's called as Article 14. So उसका violation है. Then another is Article 19.
अब लोग बोलेंगे सर आर्टिकल 19 टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट हाउ इज फ्रीडम ऑफ स्पीच गेटिंग अफेक्टेड? नो, हियर आर्टिकल 19 ये वाला बात हो रहा है। आर्टिकल 19(1)(g) पढ़ो क्या कह रहा है। इट सेज राइट द प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स, है ना, उसमें क्या क्या है, एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। So Article 19 also talks about right to profession, right to carry on any occupation, trade or business. So this is also getting affected. ठीक है, so इसीलिए हाई कोर्ट ने कहा Article 14 and 19 is getting affected. The court said that by allotting 75% reservation for locals, the act militates against the rights of citizens for the rest of the country. यानी बाकी के जो लोग हैं, rest of the states के जो country लोग हैं, उनके अगेंस्ट जा रहा है, and that is why it should not be there. It has made artificial walls. It might impact the efficiency and all. ठीक है, so that is what it is, है ना, artificial walls have been created. Okay, where it might lead to inspector raj. तो जैसे है ना कि right to move freely throughout the territory of India, right to reside and settle in, ये भी थोड़ा सा इफेक्ट हो जाएगा ना कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट लोग नहीं जाएंगे अगर सब स्टेट ऐसा बनाने लगे कि मेरे ही स्टेट को लोगों को जॉब मिले, then of course people's movement will sort of gets restricted and all, है ना. So these are the things being talked about. ठीक है, so कुछ और स्टेशन like आंध्र प्रदेश and झारखंड have also brought similar legislation. हाँ, तो जैसे आंध्र प्रदेश में भी ये मामला गया था, बट आंध्र प्रदेश सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट had said it might be unconstitutional. उसको पास नहीं किया था बिल, मतलब उसने ऑर्डर पास नहीं किया था, बट had said ना, तो हो सकता है, बट इट इज येट टू हियर द केस ऑन मेरिट्स. तो अभी पूरा फाइनल जजमेंट नहीं आया इसका आंध्र प्रदेश जजमेंट का. ओके, यस, आंध्र प्रदेश वाले मामले का. ओके, लेट्स वेट फॉर अदर स्टेट्स जजमेंट आल्सो. There are more often a few private employees who get the migrant labor work and all, है ना. So these are the things being talked about. इसमें काफी चीजें, protectionism and all is in the labor market is not done, so that is what the author is writing. Okay, yes. Okay, India Japan converge in Southeast Asia. Converge मतलब दोनों के आइडियाज और दोनों के जो इंटरेस्ट है वो मैच कर रहे हैं एक तरह से, है ना. Upon dropping a series of China-led infrastructure projects due to sustainability and geopolitical concern, the Philippines is now redirecting the attention towards Japan and India as alternate source for development and security. Okay. अब देखो यहाँ पर इंडिया है, दिस इज जापान. सो फिलीपींस ने ये कह रहे हैं कि ड्रॉपिंग ए सीरीज ऑफ चाइना-लेड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो फिलीपींस इज डिसाइडिंग नॉट टू अलाउ चाइना फॉर डेवलपमेंट इनिशिएटिव rather than it is moving towards India and Japan. आपको पता है इंडिया और जापान का अच्छा रिलेशन है ना, by and large. So, for example, Philippines is moving towards India. The best example is this one. आपने देखा था last year जनवरी में, this was in the news. Philippines to buy BrahMos missile system from India for $375 million. Okay, ये शायद आपको पता होगा, लास्ट ईयर न्यूज में था कि BrahMos जो है ना, this has been manufactured by both India and Russia together. BrahMos missile system. सो ये इंडिया से खरीदने का इरादा था फिलीपींस का, ठीक है. सो फिलीपींस हैड डिसाइडेड, और लेट मी टेल यू, सो इंडिया के DRDO एंड रशिया की ऑर्गेनाइजेशन है NPO Mashinostro, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन. सो दिस मतलब आप समझो ब्रह्मोस एक्चुअली ये ब्रह्मपुत्रा से आया है. इट्स अ रिवर इन इंडिया. MOSA मॉस्कोवा इज द रिवर इन रशिया. सो एक DRDO इंडिया की, सिमिलरली रशिया की एजेंसी, दोनों ने मिलकर बोथ हैव मेड दिस ब्रह्मोस मिसाइल, है ना, देखो लिखा ब्रह्मपुत्र एंड मॉस्कोवा. एंड फिलीपींस हैड डिसाइडेड टू बाय इट फ्रॉम इंडिया, ठीक है. उसी तरह से फिलीपींस इज टेकिंग हेल्प फ्रॉम जापान अंडर ODA, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस होता है, ठीक है, उसके अंदर. ओके, सो नाउ अभी रिसेंटली न्यूज में था, देखो 13 अक्टूबर की न्यूज है, फिलीपींस लुकिंग टू बाय मोर ब्रह्मोस मिसाइल. तो फिलीपींस ने इरादा किया है कि और ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेंगे. ओके, व्हाट इज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल? सुपरसोनिक मिसाइल किसको कहते हैं? आफ्टर द क्लास इज ओवर राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, नीचे लिखना है. जैसे बहुत सारा होता है अल्ट्रासोनिक, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक. सो सुपरसोनिक का क्या मतलब होता है? इट इज रिलेटेड विद सम स्पीड, ठीक है. दे आर एक्चुअली कंपेयरिंग इट विद द स्पीड ऑफ साउंड एंड ऑल. तो आपको बताना है आफ्टर द क्लास इज ओवर व्हाट इज सुपरसोनिक, ठीक है ना, कौन से स्पीड को कहते हैं. So Philippines and Japan also are doing, having ODA, official overseas development assistance कहते हैं ना. Japan is helping Philippines and all in this case, ठीक है. खैर, AC coaches rise at the cost of sleeper in second class. देखो एक्चुअली थोड़ा थोड़ा फर्क होता है. एक सुपर है, कोई लिख रहा है हाइपरसोनिक क्या होता है, अल्ट्रासोनिक क्या होता है, ये सब लिखिएगा, ठीक है, go and find out. और एक होता है मैक, MACH, ये कितनी स्पीड के बराबर होता है, ठीक है. Okay, AC coaches rises at the cost of sleeper second class and all.
ओके नाउ मतलब इसमें इतना डिटेल नहीं जाना, बस अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट दैट इन द ट्रेन्स एंड ऑल रेलवे एसी कोचेस आर मोर देन स्लीपर एंड सेकंड क्लास इज गेटिंग डिक्रीज्ड एंड ऑल। तो जैसे इसमें लिखा क्या है, जैसे सेंट्रल नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न रेलवे। ओके सो जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल नॉर्दर्न रेलवे कौन सा होगा, ये वाला रीजन, दिस इज नॉर्दर्न रेलवे जोन है ना। फिर जैसे अगर मान लो सेंट्रल रेलवे कहाँ पे, देख लेना कौन कौन सा जोन कहाँ है। सेंट्रल इज 8 नंबर, तो ये वाला सेंट्रल रेलवे एंड ऑल, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट। ये एक्चुअली रेलवे जो होता है ना जोन्स में बटा होता है। जैसे जैसे स्टेट में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है ना। सो सिमिलरली रेलवे का जो कंट्रोल होता है वो जोन के हिसाब से होता है। जोनल हेडक्वार्टर भी कहते हैं उसका जो, ठीक है। और उसके जो हेड उसके जनरल मैनेजर कहते हैं, जीएम, रेलवे सर्विस ऑफिसर इज देयर, ठीक है। ओके ओके यस, द OECD रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस एंड ऑल। देखो एक रिपोर्ट आई है OECD की $100 बिलियन गोल से रिलेटेड, दैट दे हैड प्लान दैट ओके द डेवलप्ड नेशंस विल बी एक्चुअली, यही प्लान था ना जो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी CBDR के अंदर, दैट यस द रिच और डेवलप्ड नेशंस will be contributing $100 billion per year towards climate mitigation. So they will be giving it to the developing nations to fight climate change and all. Okay. तो OECD जो एक ग्रुपिंग से जनरली रिच नेशंस है इसमें, आप देखो ये यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका, कनाडा इज देयर, देन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, ठीक है। सो OECD भी जो है ना रिच नेशंस की जनरली ग्रुपिंग है मोस्टली। ओके सो यस, फाउंडेड इन 1961 एंड दे आर कमिटेड टू डेमोक्रेसी, मार्केट इकोनॉमी and they are high income economies. They can rank as very high. So go and find out where do you find the headquarter of OECD. After the class is over, write it and answer it in the comment section. ठीक है, नीचे comment section में answer करो. Okay, हाँ, common but differentiated responsibility. The idea came up in 1992 Earth Summit, Rio Summit. Yes, very good. Gseti, I have taught this in classes. हाँ. Okay, SC calls for collaborative effort to bring children into the adoption pool. अब देखो एडॉप्शन से रिलेटेड जब भी बात होती है, एक एजेंसी है, इसको कहते हैं कारा, दिस कम्स इन द न्यूज, ठीक है। सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी हम लोग कहते हैं, एंड दिस इज अ स्टैचुटरी बॉडी। स्टैचुटरी बॉडी मींस इट इज अ रिजल्ट ऑफ अ पार्लियामेंट्री एक्ट। व्हाट, विच एक्ट? जस्ट जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, ठीक है। तो इसके अंदर स्टैचुटरी, इट्स अ स्टैचुटरी बॉडी, यू शुड बी नोइंग अबाउट इट, ठीक है। अब इसका काम क्या है? दिस इज एक्चुअली इन अकॉर्डेंस विद हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री अडॉप्शन, रैटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2003। तो एक्चुअली एक कन्वेंशन, उसको कहते हैं हेग कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कोऑपरेशन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर कंट्री अडॉप्शन। इंटर कंट्री अडॉप्शन, अब देखो मान लीजिए कभी कभी इसमें क्या होता है, जब स्पेशली जब इंटरनेशनल मैरिजेस होती है, इन द सेंस कि कोई बंदा इंडिया का है, ठीक है, और वो लेट्स आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, ही वेंट टू USA, ठीक है, अब ही गॉट मैरिड देयर, ठीक है, US की लड़की से शादी कर लिया, जस्ट गिविंग एग्जांपल, एन इंडियन मेल मैरिड अ US गर्ल एंड दे गॉट चाइल्ड। अब मान लो गॉड फॉरबिड द डिवोर्स हैपेंड, तो अब चाइल्ड किसके पास रहे? US के पास रहे कि इंडिया में वापस आए, अडॉप्शन। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स हैपन, especially when the international marriages happen and let's say God forbid divorce happen or something like that. So the issue becomes कि inter country adoption कई बार कि किसके पास जाए। दूसरी बात है कि कई बार क्या होता है, लोग अडॉप्ट करते हैं, जैसे मान लो एन इंडियन ओरिजिन पर्सन इज लिविंग इन USA, ठीक है, और उसको अडॉप्ट करना है इंडिया से चाइल्ड, तो कैसे अडॉप्ट करे इन दैट केस? So there are some laws and rules because when we cross the borders, होता क्या, जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री क्रॉस करते हैं बॉर्डर, a lot of laws get changed, है ना? So the law regarding adoption in India might not be same as in USA or maybe in England or maybe in France. इसके लिए एक अग्रीमेंट साइन किया गया था, हेग कन्वेंशन, कि कैसे एक दूसरे कंट्री से अगर क्रॉस बॉर्डर अडॉप्शन करना है तो कैसे किया जाए। ओके, इंडिया इज ऑल्सो रैटिफायर, देख सकते हो, है ना? So, उसके लिए एक एजेंसी बनाई गई, कारा हम लोग कहते हैं, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, इट्स अ स्टैचुटरी बॉडी, ठीक है। सो यू शुड बी नोइंग अबाउट दैट, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, गो एंड रीड अबाउट इट, है ना? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। टुडे आई विल बी मीटिंग यू ऑन आवर ऐप एट 6 PM और क्लास, दिस इज अ फ्री सेशन, लर्निंग्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लर्निंग्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, स्पेशली फॉर 2025 है, बट 2024 वाले भी दे कैन कम एंड लर्न मेनी थिंग्स which might be helpful in the upcoming exam. So this is all about today. सर सेंटर दूर पड़ा है, अगर सेंटर दूर पड़ा है तो आप पहले निकल जाइएगा, ठीक है? So try to come, है ना?
हाँ, एक चीज और बताना है, जैसे बच्चे बता रहे कि सर सेंटर, तो जब भी सेंटर की बात हो ना, आप प्रॉपरली सेंटर देख लेना, एग्जाम सेंटर, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, सिमिलर नेम्स होते हैं स्कूल्स के, और फिर लोग जो है ना रॉन्ग सेंटर पे पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट्स डीएवी, सो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डीएवी स्कूल्स इन वन सिटी, मे बी मल्टीपल, 2-3 डीएवी स्कूल होंगे। अब उसमें क्या होता है कि आप प्रॉपरली फाइंड आउट करो कि कौन सा एड्रेस पर आपको सेंटर पड़ा है, ठीक है। सो यू हैव टू इंश्योर दीज थिंग्स दैट द सेंटर दैट यू हैव गॉट इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो सेम नाम से मल्टीपल स्कूल्स होता है कई बार एक शहर में, और बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है, लास्ट मोमेंट पे फिर गड़बड़ जगह पहुंचते हैं, ठीक है। सो बी केयरफुल दैट यू हैव टू फाइंड द सेंटर प्रॉपरली, ठीक है। So this is all about today's class. Thank you everyone. Thanks for watching. Meeting you at 6 p.m. Have a nice day.